गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे पास 23 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है। शी इज हैविंग इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट एंड शी हैज a receding lower jaw along with the crook teeth, and she is having extremely wide cleft palate as you can see here। तो ये काफी डिफिकल्ट केस है, एंड अगेन एज इज नॉट वेरी सपोर्टिव। ये एज में जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहता है। सो टुडे वी आर डूइंग दिस चैलेंजिंग केस ऑफ पैलेटोप्लास्टी। सो हमारा प्लान है बर्डाट्स टू फ्लैप पैलेटोप्लास्टी along with intervallar veloplasty, which means we are going to repair her स्पीच मसल्स प्रॉपरली, एंड बाद में जो साइड में जगह बनेगा देयर वी विल पुट द बकल फैट पैड। बट थिंग्स टू रिमेंबर, आइडियल एज फॉर पैलेटोप्लास्टी इज फ्रॉम 9 months to 18 months। उसके बाद स्पीच रिजल्ट्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड ऐसे केसेस में वी मे हैव टू डू पैलेटल लेंथनिंग प्रोसीजर और फेरिंगोप्लास्टीज टू इम्प्रूव स्पीच। डेफिनेटली यहाँ पे स्पीच थेरापी का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। सो पेशेंट हैज टू टेक एग्रेसिव स्पीच थेरापी आफ्टर पैलेटोप्लास्टी। सो विल सी हर रिजल्ट।